Hello, students. Good morning. Welcome to the class 12 Indian Economics, Chapter 1 Indian Economics, the Aim of Independence. Today, we will discuss in this chapter the last topic of this chapter, that is the positive impact of British rule in India. Though the British rule in India caused colonial exploitation, but certain benefits, development also take place in the country due to the various steps taken by the British government. Let us consider what kind of positive effects of British rule in India are. That is, number one, commercialization of agriculture. The British government introduced, forced the Indian people to cultivate the agricultural land for growing commercial crops in place of growing the food grains only. This will positively affected the economy, which ultimately insist the farmers to grow commercial crops in their agricultural land, and they had got benefited by this commercialization nature of agriculture. Their economic benefit has been increased due to the commercialization of the agriculture introduced by the British government during their administration. Let us consider अरे यार थोड़ी देर रुक जाओ, भटभट करना फिर शुरू हो गए। जब बनाओ तभी करते हैं। Let us consider the second positive impact of British rule in India, that is development of infrastructure. The Britishers developed various types of infrastructure facilities during their rule, that is making roads, rail, developing communication, as well as airways and the seaways. Due to the introduction of the various roads, rails, communication facilities, air route, seaways, the
Indian economy also benefited from the infrastructural development made by the British government. The third positive impact is the check on famines due to the construction of roads and rails during the famine time. The necessity goods can be sent easily to the people in the different part of the country, so that the famines, the drawback of famines can be checked. And fourth positive impact of the British role in India was monetary system of exchange. The Britishers introduced in our country the monetary system of exchange, the introduction of money. Before the British rule in Indian economy, the barter system of exchange was followed. But after the British rule, due to the introduction of the money, the Britishers solved the problem of barter system by introducing monetary system in the exchange process, and in this way the country was benefited from the monetary system of exchange. And the last benefit, that is fifth positive impact of British rule in India, was the effective administration. They have provided the Indian economy effective system of administration. How the government followed an effective and efficient administration setup which left a legacy of effective work culture for people of India. They served as a ready reckoner for our policy planners and politicians. In this way, the Britishers provided us some benefit in their ruling period. इस तरह से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने केवल हमारा शोषण ही नहीं किया, एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं किया, बल्कि उनसे देश को कुछ सकारात्मक उपलब्धि भी प्राप्त हुई है। वह हम इन 5 रूपों में डिस्कस कर चुके, अर्थात कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण करके किसानों को बताया कि केवल अनाज का उत्पादन ही न करें, बल्कि जूट, कपास,
इंडिगो, इन सभी चीज़ों का भी उत्पादन करें ताकि उसके सेल करके वे अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, एयर ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन की सुविधा प्रदान करके देश के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया। रोड कंस्ट्रक्शन करके, रेल कंस्ट्रक्शन करके, टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस स्थापित करके और चेक ऑन फाइनेंस, दुर्भिक्ष के समय में सुगमता से लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सकी। यह केवल रेल और रोड की उपलब्धता से ही संभव हुआ और हम लोग दुर्भिक्ष के समय में अपने देशवासियों को सुरक्षित रख पाए। चौथा, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ब्रिटिशर्स ने हमें आदान प्रदान के लिए मनी का माध्यम बताया कि कैसे आदान प्रदान, जो वस्तु के बदले में वस्तु लेते और देते थे, उसकी जो समस्याएं हैं वह मनी के इंट्रोडक्शन से कैसे समाप्त किया जा सकता है और कैसे हमें सुगमता प्रदान करती है विभिन्न वस्तुओं के आदान प्रदान में। और पांचवा, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमें कैसे प्रशासन चलाया जाता है, कैसे प्रशासन किया जाता है, वह हमारे देश पर शासन करके वह तौर तरीका हमने बताया। आज भी हम उसी तौर तरीके पे एडमिनिस्ट्रेशन अपने देश का चला रहे हैं। तो इस तरह से यह प्रथम अध्याय हम लोगों ने आज समाप्त किया। नेक्स्ट डे, in the next class, we will discuss the second chapter, that is Indian economy 1950 and 1990. Thank you. It is well.